Good evening and welcome. Welcome to Divine Healing Valley Spirituality and Healing Meet, and this is the weekly Wednesday meet. And the topic for today is Yog Vasishtha Wisdom, and we are going to talk on Samarpan. Yes, everybody saw the topic, and this is in continuation with what we have done in the last few sessions of Yog Vasishtha, where we saw the basic context of the dialogues between the Brahmarishi Vasishtha and the Prince Ram, and he is getting the highest wisdom of Gyan Yoga to end the suffering and miseries of life. And we saw Purusharth is the main context of the discussion, and we also saw the pillars of Purusharth, which was explained to Prince Ram as the pillars of Raghukul. तो रघुकुल के जो स्तंभ थे उसके बारे में उनको जानकारी मिली. We discussed that also. So we discussed on Purusharth, we discussed the pillars of Purusharth, and in the last session we talked about Niyati, destiny. And today we are going to talk of Samarpan. So what does the word signify to you, or what does it mean to you? When you hear the word Samarpan, obviously there must be many thoughts coming across to you. So first let us see what are the thoughts that are coming across to you, so that we have a clearer understanding of what you mean by Samarpan. And then we will go step by step how we can move forward on this journey of Samarpan. I call this as a journey of Samarpan because surrender or Samarpan is not an event. It is a journey. It is a part of your spiritual journey. So we will look at where are we and how we can progress on this. So that is the distinction we are going to take away from the session today. So first, let us have some discussion on what do you understand by Samarpan. So anybody can start. What is your idea of Samarpan? You can shout out, and all the answers are right, by the way. So whatever is true for you, is real for you, is what is applicable for you. कौन बोलना चाहेंगे? Complete devotion. Devotion. Okay, I'll take one word. Complete devotion or devotion. Devotion is one. Okay, so Samarpan means devotion. Everybody agrees to that. Very good. So that is one understanding. और क्या है? बहुत है. It's like an ocean. You can have different levels of Samarpan. We will see that. So devotion is one. Unconditional love. Unconditional love is unconditional love. उसमें surrender होना जरूरी In नहीं है. unconditional love, we can do Samarpan. Okay, so you think if you are in love with somebody, you can do the Samarpan part comes easily to you. Okay, like that. Yes. Okay, so unconditional love किसके लिए हो सकता है? Only divine. Only divine. That's it. Surrender to divine is absolutely perfect. Correct. Very good. Very good, Yes. Gunjan ji. So you are understanding that unconditional love can lead to surrender is absolutely perfect, because we are talking of divine, and divine के सामने तो surrender करना ही अकलमंदी है. That is the spiritual journey that we are on. So when you surrender to the divine, you are in unconditional love. In fact, when you surrender to the divine, you receive unconditional love from the divine. You can access that unconditional love when you surrender. So you can look at it that way also. Very good. Okay, so we have got two distinct meanings: devotion and unconditional love for divine. That will lead to surrender. Very good. Anybody else? Any other understanding? See Mani ji, Amit ji, Harsh ji, Anirudh ji, and of course Sanjeev. Any idea? Any thought that is coming across? I will take a chance. Yeah, sure. Give up. Okay, give it up. Let go. Let go बोल सकते हैं. Give it up. Okay. Is my voice audible? Yeah. Is my voice audible? Yeah. Yeah. Okay. It was It not. is. Now it is okay. Yeah. Okay. Yeah, it was showing. How about this? How about? How about dissolution of ego? Okay. So I think surrendering the Shashi ego. is Dissolution of Of ego. ego. Yeah, like Surrendering complete of the dissolution ego. of ego.
Okay, Yeah. so surrendering means you're surrendering the ego. Okay, great, wonderful. That is another way of understanding what is surrender. So what are you surrendering? Actually, you're surrendering your ego. You can look at it that way. Perfect, Amit ji, बहुत बढ़िया. Anybody else? And Sanjeev, what did you say? I missed out. मुझे आवाज नहीं आई ठीक से. I was saying give up or let it go. हाँ, let it go, let go. तो आप let go करते हो. Let go करते हो या give it up. You give it up to the divine. So all that is part of, or all that is part of surrender. तो बहुत सारे हमने terms सुने भी होंगे. In Yog Vasishtha, the word used is tyag as one of the pillars of Purusharth. Tyag. So tyag, sacrifice, offering yourself to the deity or the divine, offering yourself to, in this case, the avatar Ram. So Lakshman is completely samarpit. Sita is completely samarpit to Ram. So that way also you can consider that as samarpan. So full faith and full trust, complete devotion. Yeah. So that way also you can look at it. समर्पण. Yes, very good. अनिरुद्ध जी. हाँ जी, मेरा तो वही एक ही आएगा, वननेस. नहीं, अभी हम डिस्टिंग्विश कर रहे हैं. हाँ जी, ये सपर में ये वननेस में जाने के लिए सरेंडर करना है. तो हाँ जी, सरेंडर को आप क्या बोलोगे? यही जो टॉपिक है यही आगे सरेंडर में आ गया ना जी. अपने आपको समर्पित करना मतलब सरेंडर करना. हाँ ठीक है, समर्पण सरेंडर करना. ठीक है. और सरेंडर किस लिए करोगे? वननेस के लिए. ठीक है, परफेक्ट है. सरेंडर क्या करोगे? आप सरेंडर क्या कर अपनी जो सोल है उसको सरेंडर करना है डिवाइन के साथ. ओके ओके, गॉट इट. तो सोल को सरेंडर करना है डिवाइन के साथ. आई विल नॉट से एनीथिंग ऑन दिस राइट नाउ, बट वी विल टेक मोर व्यूज ऑन दिस. ओके, यस. सो अमित जी, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट. कहाँ से आप आ रहे हो, जो हमने डिस्कस किया भी था. सो यू आर सरेंडरिंग योर ईगो and then you are moving forward on the spiritual journey, which is absolutely perfect. Anybody can connect with it. Yes, Gunjan ji. Sir, what I feel, we are already one with God. So if we are in surrender mode, then already in oneness. Yeah. So there is no need. My point is, what yeah. are you surrendering to become one with the divine? Look at it that way. Yeah, we are surrendering our ego. We are surrendering everything. हम पूरा faith के साथ, belief के साथ, love के साथ, unconditional love, ये सब चीजें त्यागनी तो पड़ेंगी ही सारी. त्याग is a very big thing to reach oneness and to reach samarpan. Absolutely perfect, wonderful. So Sir, we all have सकता. got it, Gunjan ji. हर एक के अलग अलग व्यूज हैं. We are just taking the views right now, so it is perfectly fine. Your view is perfect. Yeah. And so are the views of other people. It is also perfect, right? Yeah. Because that is where they are experiencing it, right? Okay, let's acknowledge everybody. Very good. और जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया, you can share whenever you feel comfortable. So हर्ष जी, मनी जी, देवेश जी and पुष्पा जी, नमस्कार. So anybody who wants to share in between can do that. But Samarpan, let us understand in a more systematic way, I would say. सीधा हम बोले surrender to ego, तो ego is not something which you pick up from your cupboard and give it and surrender it. हाँ, तो कई लोगों को तो अपने ego का फ्लेवर ही नहीं मालूम है कि मेरा ego है कौन सा. कईयों को अपने विकार ही नहीं मालूम है, तो वो surrender क्या करेंगे, है ना? तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. तो सबसे पहले हमने सुना है ना, ये भगवान के सामने जाते हैं, आरती गाते हैं. क्या गाते हैं हम? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा. सुना है ना ये? तो द फर्स्ट स्टेप ऑफ सरेंडर इज द मटेरियल पोजेशंस दैट वी हैव, व्हिच वी कैन सी, दिख सकता है हमको, वो सब हम अर्पण कर रहे हैं. वी आर ऑफरिंग टू द डिवाइन. ये क्लियर है ना? हमने कहा समर्पण किसको करना है? डिवाइन को करना है. तो डिवाइन को हम जो भी अर्पण कर रहे हैं, मंदिर में जाते हैं, हम फूल अर्पण कर रहे हैं, हम दिया जला रहे हैं, अगरबत्ती जला रहे हैं, धूप बत्ती जला रहे हैं, और वो अर्पण कर रहे हैं. सो वी आर ऑफरिंग टू द डिवाइन. दैट इज द फर्स्ट लेवल, अर्पण. तो सरेंडर को समझना है तो सबसे पहले मटेरियलिस्टिक पोजीशंस में अगर हम कुछ सरेंडर करते हैं डिवाइन को, यू कैन लुक एट इट एज जो भी हम अर्पण करते हैं. अमित जी, am I clear? Am I audible? Am I audible? Yes, no?
Yes, okay, good. There was a small lag. It is okay. Okay, okay. वो बाद में आता है ना, इंटरनेट इज अनस्टेबल, इसलिए पूछ लिया. राइट, तो अर्पण क्लियर है. अर्पण इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ समर्पण, आई वुड से. मटेरियलिस्टिक पोजीशंस, मटेरियलिस्टिक पोजीशंस में हम क्या क्या दान कर सकते हैं या क्या क्या ऑफर कर सकते हैं डिवाइन को? वी कैन ऑफर, we can see divine in the people around us, and then what do we do? We offer food, we offer clothes, right? So whenever we are offering something to the people, we are offering actually to the divine, because we see the divine in them. So that way you can look at samarpan is whatever physical possessions that you have. तो कई लोग तो अपना पूरा wealth ही donate कर देते हैं, right, to institutions and charity, to people. So wealth, food, clothes, whatever you feel you can donate or you can offer to the divine, that is arpan. I hope this is very elementary and basic, so we can always accept this, right? Arpan is the first level of samarpan. अब अगर अर्पण भी नहीं हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम हो रही है? उसको एक्सपीरियंस ही नहीं है देने का, वो देना ही नहीं चाहता है. कोई होगा ना ऐसे कि मेरे पास ही नहीं है, मैं औरों को क्या दूं? तो सब कुछ एक्यूमुलेट करके बैठा हुआ है. तो उसको एक स्टेप और पीछे जाना पड़ेगा. वहां पे क्वालिटी कौन सी है जो हमको इन्वोक करनी है? दैट इज अस्तेय एंड अपरिग्रह. आई होप एवरीबडी इज क्लियर ऑन दिस. अस्तेय इज नॉन स्टीलिंग, जिस पे मेरा हक नहीं है उसकी मैं कामना या इच्छा नहीं करूंगा. कभी किसी से कुछ छीनूंगा नहीं, चुराऊंगा नहीं. जो मेरा हक नहीं है, आई विल नॉट इवन थिंक अबाउट इट. इट कुड बी प्रॉपर्टी, इट कुड बी वेल्थ, इट कुड बी आइडियाज, इट कुड बी एनीथिंग. करेक्ट. एंड अपरिग्रह, नॉन पॉसेसिवनेस, मिनिमम रिक्वायरमेंट के साथ जीना. जो एक्स्ट्रा है बांट दो. तो आई एम नॉट पॉसेसिव अबाउट माई थिंग्स. ये दोनों क्वालिटी आएंगी, देन यू विल बी इन अ पोजीशन टू डू द अर्पण. करेक्ट. सो वी आर गोइंग स्टेप बाय स्टेप. समर्पण का पहला लेवल हम बोलते हैं अर्पण है. अर्पण नहीं हो रहा है तो अपरिग्रह और अस्तेय पे फोकस करो, एंड देन यू विल बी एबल टू गिव टू पीपल, बिकॉज यू आर सीइंग डिवाइन इन देम. सो यू आर ऑफरिंग टू द डिवाइन. आप सेवा करते हो, ऑफरिंग टू द डिवाइन. आप लोगों की मदद कर रहे हो, किसी भी तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हो किसी को भी, यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू द डिवाइन. सो अर्पण इज क्लियर, राइट. सेकेंड लेवल ऑफ समर्पण इज, वी से तर्पण. तर्पण क्या है? तर्पण इज एक्चुअली, हमने सुना होगा एंसेस्टर्स को हम जल देते हैं या उनकी पितृपक्ष की पूजा करते हैं, उसको तर्पण बोलते हैं. तर्पण इज एक्चुअली वॉशिंग अवे. How do we use this word? You do penance and tap to wash away your sins, to wash away all the vikars in you. Correct? तो जब अपने अंतर्मन को आपने साफ करना है, अपने चित्त को साफ करना है, तो जो गुनास हैं, जो विकार हैं, क्या वो तामसिक हो, राजसिक हो, या आपके जो भी विकार हैं, उनको अगर आपने शुद्धिकरण करना है, उस प्रोसेस को हम तर्पण बोलते हैं. So how do we do that? How do we do that? We pray to the divine, we access the divine love, divine wisdom, divine light, and we surrender our, जैसे संजीव ने कहा, let go. We let go of our anger, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद मत्सर को हम सरेंडर करते हैं. कैसे करते हैं सरेंडर? तर्पण बोलते हैं इसे. You are cleansing it in the divine light, उसको लव एंड लाइट में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, and then you send it to the universe. Now, why this is so? जब कोई अच्छी चीज, हम अर्पण में हम अच्छी चीज दे रहे हैं ना, हम कोई अच्छी चीज अगर दे रहे हैं तो इट विल कम बैक टू यू इन अबंडेंस. दैट इज द लॉ ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग. जो भी आप यूनिवर्स को दे रहे हैं वो वापस आएगा. अगर आप यूनिवर्स को एंगर, फियर एंड हेट्रेड देंगे तो वो वापस आ जाएगा. तो उसको सीधा सीधा नहीं अर्पण कर सकते, उसको तर्पण करना होगा. यू हैव टू क्लींस इट, immerse it in divine light, divine love, divine wisdom, and then let it go to the divine so that it is going as love and light. And that is what we do in the healing, right? हम सारे अपने negativities को divine light में heal करते हैं, उसको dissolve करते हैं, and then it goes to the divine as love and light. Then we are radiating that to the universe. So I hope everybody is clear on this. तो जो बाहर के possessions हैं हमारे, उसको हम अर्पण करते हैं,
और जो हमारे अंदर के विकार हैं, दुख दर्द हैं, सफरिंग मिजरी है, उसको हम तर्पण करते हैं. यू क्लींस इट, यू प्यूरिफाई इट, एंड देन यू let it go to the divine in the form of love and light. So this is the second level of samarpan, right? तो अर्पण में हम हमेशा अपनी अच्छी चीज देंगे. तो पहले एक बार मैं अपने किसी फ्रेंड या जो भी बोलिए किसी के साथ मंदिर गया था. तो वी वर ऑफरिंग द जैसे पैसे दान पेटी में डालते हैं. तो एक फटा हुआ नोट माय फ्रेंड वाज पुटिंग, मैं फटा हुआ नोट क्यों डाल रहा है? कहते नहीं, यहाँ सब चलता है. मंदिर में है ना, डाल सकते हो. एंड आई एक्चुअली आई डिडंट से एनीथिंग दैट टाइम. बाहर आके मैंने कहा जो तुम दे रहे हो, यू आर गिविंग इट टू द यूनिवर्स, यू आर गोइंग इट टू गिव इट टू द डिवाइन, इट विल कम बैक टू यू. तुम एक फटा हुआ नोट डाल रहे हो, तुम्हारे पास 100 फटे हुए नोट आ जाएंगे. क्या करोगे फिर 100 का? वो भी सारे मंदिर में डालोगे तो 1000 आ जाएंगे फिर तुम्हारे पास, राइट? So you have to be very, very careful when you are offering something to the divine. You offer the best. अक्सर हम सोचते हैं कि हमने दान कर दिया, दान में फटे हुए कपड़े दे रहे हो, पुराने कपड़े दे रहे हो जो रद्दी के काम आने हैं. दैट इज नॉट दान. जो रद्दी है वो रद्दी में ही डालो. दान में आप सबसे अच्छी वस्तु देते हो. तो अर्पण हमको सबसे अच्छी चीज करनी है डिवाइन को. तो यू ऑफर द बेस्ट स्वीट्स एज प्रसाद. यू ऑफर द बेस्ट खीर, पूरे दिल से बना के आप खीर बना प्रसाद बना के आप बांटते हो. जो हम नवरात्रों में, अभी तो नवरात्र शुरू होने वाले, नवरात्रों में जो कंजक बनाते हैं हम देते हैं, कितने दिल से और कितनी खुशी से देते हैं हम लोग, राइट? और अच्छे अच्छे नोट बना के देते हैं उसमें, चाहे वो 11 रुपए ही हो. इट इज ऑल फ्रेश एंड क्रिस्प नोट्स. फटे पुराने नोट नहीं देते हैं. तो अर्पण में हमेशा अच्छी चीज देते हैं, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, अच्छा धन, करेक्ट? एंड सिमिलरली जब आप तर्पण करते हो तो आप अपनी बुरी चीजें दे सकते हो, लेकिन उसको फिर ट्रांसफॉर्म करना है आपने लव एंड लाइट में, डिवाइन लाइट, डिवाइन लव, डिवाइन विजडम में, एंड देन यू गिव इट टू द, देन यू लीव इट फ्रॉम योर सिस्टम. क्लियर? So everybody clear on अर्पण एंड तर्पण? ओके, लेट्स हैव सम डिस्कशन. अगर कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई डिस्कशन करनी है, बिकॉज ये दोनों अगर नहीं होगा आप समर्पण कर ही नहीं सकते. इम्पॉसिबल है. जो हम ईगो की बात कर रहे हैं, सॉल्विंग अवर ईगो एंड सरेंडरिंग अवर ईगो, वो सब इसके बाद आएगा. पहले दो लेवल पे कौन कौन खड़े उतर रहे हैं देखते हैं. हाँ, तो कोई डाउट्स है? एनी डाउट्स ऑन अर्पण एंड तर्पण? These are the technical words used in scriptures, so that's why I picked up the same thing. I'm not giving any translation for this. इसको वैसे ही याद रखना. Yes, Gunjan, you want to share something? No. Okay. Anybody else who wants to share anything? What is opening up? Yes, sir. Yes, Harshi. गुड इवनिंग सर. हाँ जी, अभी हाँ जी. आपने अर्पण की बात की, तो ये तो सिर्फ मंदिर की बात हुई. सपोज मैं अपने कोई पुराने कपड़े जो अब बच्चे नहीं पहनते हैं, छोटे हो गए, और वो किसी को दे रही हूँ, तो क्या वो गलत है? नहीं, गलत नहीं है. आपका यूज नहीं है, किसी और के काम आ रहा है, बिल्कुल दीजिए, पर बिल्कुल अभी दीजिए. इससे पहले आपने वर्ड बोला ना कि फटे फटे पुराने नहीं पुराने होनी नोट. चाहिए. फटे पुराने नहीं है, वो सिर्फ आपके नहीं लिए कपड़े अच्छे हैं, छोटे हो गए हैं, आप नहीं यूज कर हाँ, सकते, तो आप उसको दे रहे हैं जो यूज कर सकता है. बिल्कुल सही है. तो उसमें कुछ गलत नहीं है नहीं ना? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है. ऑल आई एम सेइंग इज हम्म. दे शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी एंड इन गुड कंडीशन. हाँ, बस वो छोटे हो गए. हाँ, तो ठीक है. अगर बच्चों के हाइट आपके बच्चों वो के कर जब गई तो जो वो छोटे बच्चे हैं उनको काम आ जाएगा, वो तो बड़े अच्छे से पहनेंगे वो, है ना? डेफिनेटली. एंड इट डजंट हैव टू बी इसके साथ समबडी. में एक बात और. बोलिए बोलिए. हाँ, पीछे मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट, बट एक क्राइसिस आया था, तो उसमें काफी लोगों ने डोनेट किया था. हाँ जी, हाँ जी. तो हमने डोनेशन दिया, पर हमें ये नहीं पता कि एक्चुअली वो वहां तक पहुंचता है या नहीं. बहुत यूनिवर्स को बार ऐसा मालूम होता है, है आपकी बहुत यूनिवर्स को मालूम है कि हाँ, आपने बस दे दिया ये मैं. है. आप जिस मर्जी को दें, इट यू आर गिविंग इट टू द डिवाइन एंड यू आर गिविंग इट टू द यूनिवर्स. डोंट वरी. करेक्ट? आपका काम हो गया. द मोमेंट यू हाँ हैव जी, हाँ जी, ठीक. गिवन इट, यू हैव स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ गिविंग. आपने पूरे दिल से, अच्छे दिल से, पूरे अच्छे पुण्य कमाने के हिसाब से आपने दिया, आपको पुण्य मिलेगा. अब किसी ने बीच में गड़बड़ कर दी है तो उनको पाप लगेगा, वो आप छोड़ दीजिए, वो आपका काम नहीं है. आपने अच्छे मन से दिया,
that is good enough, right? And I think उस समय की बात हो रही है जब बहुत बड़ा एक क्या हुआ था, उसके ऊपर तो मूवी भी बनी थी, बहुत बड़ा ट्रेजेडी हुआ था कुछ उत्तराखंड में, जी, तब की बात है शायद, है ना? Everybody was contributing, everybody was giving. Yes. So the moment you give from your side, it should be perfect giving. That's all I'm saying. Right? और डेली लाइफ में भी बहुत बार ऐसा होता है कि सपोज आप कुछ खा रहे हैं और कोई आ गया तो आपको लगता है चलिए हम खा रहे हैं तो दे देते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है इसमें, बिल्कुल बिल्कुल दीजिए, बहुत मतलब बढ़िया। दैट इज में कुछ वो नहीं है, उसके बाद नहीं आपने नहीं, उसको जो आप पैसा खा दे रहे दिया, हैं वो जैसा जो उसको आप खा रहे हैं करना। वही तो आप दे रहे हैं, तो बिल्कुल अच्छी चीज है ना, करेक्ट? और हाँ जो जी। थोड़ा सा अगर आई थिंक बासी भी शायद हो संजीव जाता सर ने है तो हम उसको चिड़ियों को दे देते हैं, विच इज ओके, दैट इज फाइन, दैट मच इज हाँ, ओके, शायद उसमें कोई संजीव गलत सर नहीं ने है। वो कार्ड वाली बात बोली थी, वो गेटकीपर था, उनको हम लोग इग्नोर कर जाते हैं, पर मुझे अच्छा लगा क्योंकि जनरली मैं भी यही करती हूँ कि अंदर तो जो दिया दिया रेस्टोरेंट में, पर बाहर जो है उनको देना मुझे ज्यादा अच्छा लगता है इंस्टेड ऑफ अंदर। Yeah, but the whole idea तो is मुझे that you बहुत are giving it to अप्रिशिएट the किया divine. वो। You're not giving it to any person, you are giving it to the divine. यस, ये ध्यान रखिए, and then ओके, things will थैंक be यू fine. सर। Correct? Okay, let's acknowledge Harshi. Okay. Very good. Yes, Gunjan, you want to share something? Go ahead. यस सर, दान भी बहुत तरह का होता है, जरूरी नहीं है इट इज मटेरियलिस्टिक, so you can give different kinds of दान. Absolutely. So yeah, बट दान की बात अलग है, यहाँ अर्पण की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? तो अर्पण में okay, मेटेरियलिस्टिक पोजेशंस की बात करी है हमने, लेकिन यस, यू कैन ऑलवेज गिव प्रेयर्स, यू कैन सेंड प्रेयर्स टू पीपल, यू कैन सेंड योर ज्ञान, आप अपना टाइम दे सकते yeah. हो, आप अपनी विद्या सिखा सकते हो लोगों को, Mm. आप ज्ञान बांट सकते हो, आप ब्रह्म ज्ञान बांट सकते हो, विच इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ दान, राइट? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, नो प्रॉब्लम। यस संजीव, यू वांटेड टू शेयर समथिंग, गो अहेड। So one of the example is like you are giving arpan right now. ज्ञान का अर्पण दे रहे हो आप. Okay. Yes. So it is At for the the same divine. time, at the same time, अभी जो हर्ष जी ने बोला कि अबाउट जैसे कपड़े छोटे हो गए, ऑन अ लाइटर नोट, आजकल हम लोगों का आजकल फैमिलीज में कॉन्सेप्ट हो गया वार्डरोब को अनवांटेडली भर देना. तो वो चीजें छोटी नहीं हुई, लेकिन जो बहुत चीजें कहते हैं कि जिस चीज को आपने लास्ट 6 months में यूज नहीं करा, वो निकाल देना चाहिए. सो दे आर ऑल्सो Absolutely. गुड, अच्छा प्रोडक्ट है, नॉट इन टॉन फटे हटे हाल में नहीं है. आई थिंक दैट कैन ऑल्सो बी अर्पण टू समबडी हु कैन यूज इट. Absolutely. Perfect. It is in good condition and you love it, but then you find that it is not of use to you, so you give it to somebody who can use it with happily. Happily they will take it. And it doesn't have to be your mates and all that. Sometimes it has just happened that it is, it could be your friends or it could be your relatives who are a bit shorter than my son, and they say, wow, this is really good. And he says, मेरे को ये पहनना ही नहीं है, ये तो निकालने के लिए रखा हुआ है, because छोटे हो गए. But they are really good, so you can definitely give it to people who can use it. Perfect, very good. Yes, Anirudh ji, आप कुछ शेयर करना चाह रहे थे? Yes, no, maybe? No, sir. No, Okay, nothing. perfect. Okay, let's acknowledge everybody who shared. So we are clear on Arpan and we are clear on Tarpan, correct? Now let us move to the real part of Samarpan, which is surrender. Now what are you surrendering? And why are you surrendering? Anirudh ji ने बहुत अच्छा बताया. You are surrendering so that you become one with the divine. And what are you surrendering? You are surrendering your ego. बट जैसे मैंने कहा, ईगो इतना आसान नहीं है कि एक कमरे में एक कबड़ के अंदर रखा हुआ निकाला और दे दिया. हाँ, तो यू हैव टू डू लॉट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन फॉर दैट. तो व्हेन वी से समर्पण, वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द, you can say, the intricacies of samarpan. Now samarpan is always done to the divine. Okay, samarpan is always done to the divine, because if we see, always the lower forms are surrendering to the higher forms, correct? So we can have compassion, we can have love for all the life forms that are below us, but then for human beings, the life form which is above them is the divine or the celestial masters or an avatars. तो इन्हीं लोगों को हमने सरेंडर करना है, करेक्ट? तो सरेंडर इज ऑलवेज डन टू द डिवाइन. सो यू हैव, जैसे भक्ति योग में बोला गया, डिवोशन. तो आपके कोई आराध्य हैं, आपके कोई देव हैं, मे बी महाविष्णु, मे बी शिव जी, मे बी राम जी,
any god, any religion, any place of worship that you go, that is part of your bhakti and that is part of your samarpan. Yes, that will invoke the devotion in you. आपके अंदर भक्ति भाव जागृत करते हैं, तो वो आपके लिए समर्पण है. Right? So it is always done to the divine. Why am I saying not to any living guru? Living guru will show you the path. उस पाथ पे चलते हुए आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को फास्ट आगे बढ़ सकते हैं. Right? But then your journey is different and your guru's journey is different. So you cannot follow that guru blindly. You follow the path which is told to you by the guru and you surrender to the divine, and the divine guidance will guide you how to move, with what pace to move, and that is what is the real samarpan. तो समर्पण हमेशा डिवाइन के लिए ही होता है या अवतार के लिए ही होगा. But my suggestion is, even if it is some guru, it should be energy form. Guru should be in energy form. अगर bodily form में है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ईगो का फ्लेवर रहेगा ही रहेगा, क्योंकि nobody is 100% free from ego when they are in the body. How many of you can connect with it? जितने मर्जी refined हो, no guru would be 100% divine, correct, in the bodily form. So you can follow their path, follow their instructions, follow their teachings, move on the path, and it is your spiritual path with full surrender to the divine and the guidance of the guru, and you will, with divine grace, you will be moving forward on your journey, which is the right path of samarpan. Correct? Now there can be some situations, because we are very fond of human relationships. क्या मैं अपने माता पिता को समर्पित हो सकता हूँ? क्या मैं अपने पार्टनर, स्पाउस को समर्पित हो सकता हूँ? क्या मैं अपने भाई बहन को समर्पित हो सकता हूँ? It is a bit tricky, I would say. Tricky क्यों है? कहीं ना कहीं ईगो क्लैश होगा ही होगा कहीं आगे चल के, because you are a work in progress, they are also work in progress. कोई फिनिश प्रोडक्ट तो भी बनानी है, तो कभी ना कभी कोई ना कोई ईगो क्लैश हो सकता है, एंड इट कैन एक्चुअली पुट यू इन ए ट्रैप ऑफ पुत्र मोह या यू कैन से पत्नी मोह, पार्टनर मोह, या कुछ भी, किसी भी मोह में फंस जाओगे, आपको सत्य और धर्म के रास्ते से वो भटका देगा. राइट? सो व्हेन यू आर surrendering to a human being, it is slightly dicey. There are many instances on this, correct? Except when it is an avatar, then it is fine. Like Arjun surrendered to Lord Krishna. We know Krishna is an avatar, so he got the right guidance and without no problems there. Now Lakshman was completely surrendered to Lord Ram, again an avatar, no problems. Correct? तो कभी कभी समर्पण में हो सकता कोई प्रॉब्लम ना हो, बट जनरली क्या देखेंगे, आपके मूड्स, आपके थॉट्स, आपके इमोशंस चेंज होते हैं टाइम के साथ साथ. यू विल ऑल्सो change your beliefs and your, you can say, affections, and similarly it is true for others. So surrendering to a human being may not be the perfect path for you. Surrender to the divine and follow the path of your guru, which would be the right approach, which is also mentioned in the shastras. Correct? अब examples क्या हैं? Suppose we take महाभारत. देवेश जी आता हूँ आपके पास. हाँ जी. So महाभारत में क्या हुआ था? Krishna was the mentor for Arjuna and he gave him the right advice. Karna was completely devoted to Duryodhan. Complete surrender to Duryodhan. Whatever you say is right, because he did something when he was in distress. So he was completely obliged to him कि मैं, मेरी सारी जिंदगी मैंने अब तुमको समर्पित कर दी. नतीजा not good. Correct? So there can be ego traps where you can be swayed away from the path of satya and dharma. This is a pitfall. इस pitfall को ध्यान में रखना है. Otherwise there is absolutely no problem. You can be completely devoted to some human being in your life if you think they are absolutely divine light. Correct?
Another example I can give you is which is again from the Mahabharata. Bhishma was completely surrendered to anyone who is sitting on that throne. हस्तिनापुर के सिंहासन पे जो बैठेगा उसके लिए मैं समर्पित हूँ. Now how can you take such a blind decision? Correct? उस पे कौन बैठा, कोई अधर्मी बैठ गया तो now he can't do anything. He has to serve him. तो सत्य और धर्म से भटक गए. वैसे ही पुत्र मोह और पत्नी मोह के चक्कर में आप सत्य और धर्म के मार्ग से भटक सकते हो. इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ह्यूमन बीइंग्स को जब आप समर्पित होते हो तो यू हैव टू टेक केयर दैट सत्य और धर्म के रास्ते पे अगर हैं उस पे अडिग रहना है. देन इट विल मेक सेंस. So I've said a few things. Let us have some sharings. First, I will come to Devesh ji and then to Gunjan. Yeah, Devesh ji, go ahead. Good evening, everybody. हाँ जी, हाँ जी. Sir, मेरा क्वेश्चन ये है कि how we can come to know that somebody is of avatar level consciousness. जैसे हम श्री कृष्ण के बारे में भी कहते हैं कि how we come to know, क्योंकि अल्टीमेटली ये तो सब स्टोरीज हैं. इफ यू सी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ स्टोरीज, तो ये तो किंग्स एंड क्वींस की स्टोरीज हैं, है ना. और उस समय क्या हुआ, क्या वो गॉड नोज, बिकॉज जो स्क्रिप्चर्स में बहुत सारी चीजें किंग्स के फेवर में बोली जाती थी एंड बहुत सारी चीजें होती हैं. बट कैसे हम एक नॉर्मल लाइफ में कैसे पहचाने कि ही इज अवतार? I said that when you are surrendering to anybody who is in human form, it is slightly tricky. So you better not do that. You surrender to the divine, ना? आप किस भगवान को मानते हैं? But Krishna was also come in the human form, no? That's what I'm saying. If you're very clear that he is an avatar, you can go ahead. You won't fall into a trap. But otherwise, you follow somebody who is divine. जो 100% divine आप मानते हो, उनको follow करो ना. किनको मानते हो आप? लॉर्ड नारायण. बस ठीक है. विष्णु. Follow him. बात खत्म हो गई. है ना? भक्ति योग में you don't need 100 gods to follow, ना. You just need one. सब एक ही हैं. सब एक ही हैं. So whatever you feel is the right one, you follow that. बात खत्म. इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा पिटफॉल है. अगर किसी जिंदा इंसान को फॉलो करोगे तो पिटफॉल हो सकता है. इसलिए सत्य और धर्म का मार्ग आपको बहुत ध्यान से चुनना पड़ेगा कि मेरे को सत्य और धर्म के मार्ग पे चलना है, और फिर भी अगर मैं इन पे समर्पित होता हूँ आई कैन ओके. बट जहाँ पे मेरे को सत्य और धर्म के मार्ग से भटकने का चांस लगेगा आई विल स्विच या आई विल नॉट फॉलो. तो यू हैव टू कीप योर आईज ओपन. अंधा भक्त नहीं बनना है ना. बहुत वर्ड ये सुना है ना आजकल. तो अंधे भक्त नहीं बनना है सर. आंखें खोल के चलना है. एक सेकंड सर, आ रहा हूँ, होल्ड कीजिए. देवेश जी, इज दैट ओके? Yes. Okay, good. For the time being, it is okay. Okay. So reframe your question. We will come back to you. Yes, Anirudh ji, go ahead. सर मुझे इनका क्वेश्चंस जो ये लगता है ये पूछना ये चाह रहे हैं कि जैसे कृष्णा और राम धरती पे आए, तो इस समय अगर कोई कृष्णा या राम धरती पे आते हैं उनको कैसे पहचानेंगे? उनको पहचानने की मुझे लगता जरूरत है क्या इनका है? आप महाविष्णु को पहचानो ना. और अगर आप किसी को गुरु मानते हो तो उनके बताए हुए मार्ग पे चलो, चल के देख लो. अगर आपके कोई गुरु हैं तो मार्ग प्रदर्शित करना उनका काम है गुरु का. उस पे चलना, सरेंडरिंग टू द डिवाइन, ये आपका पुरुषार्थ है. सर गुरु तो एक अपने सर्कल आसपास ही गुरु को ढूंढेंगे. आप तो जहां अगर मर्जी कोई ढूंढिए, अगर गुरु है आपका, वरना आप अपने आप को गुरु, अपने आत्मा को ही, आत्मा की कॉलिंग सुनिए ना, वही गुरु है. गुरु कौन है? जो डार्कनेस को हटाए, जो पथ प्रदर्शित करे आपके लिए. You can follow your own conscience, you can follow your own divinity. You don't need any guru. But if you have a guru, follow that path suggested by him. आपकी साधना आपका पुरुषार्थ है. गुरु ने जो मार्ग दिखाया वो आपका पथ है, जिस पथ पे आप चलोगे. और गुरु कृपा जब मिलेगी तब आपका तीनों का कॉम्बिनेशन होगा, तो आप आगे बढ़ोगे स्पिरिचुअल जर्नी में. Yes, so you have to choose what is okay for you. सोचिए. आते हैं वापस. Yes, गुंजन जी.
You wanted to share something? और मैं इतना सब कुछ सुन के भूल गई वैसे, बट थोड़ा थोड़ा याद है मुझे. Like समर्पण टुवर्ड्स पेरेंट्स ऑल्सो, लाइक अगर हम उनकी बात सिर्फ सुन लें, वही हमारे लिए एक समर्पण है उनके लिए. मैं ये समझती हूँ. समर्पण चाहे होने की हम जरूरत उनको नहीं है ना पेरेंट्स को. See, you have to first of all understand you are also a parent. Just because you are Yeah. born 20 years before your son doesn't make you a very, very wise person, right? So Yeah. similarly, your parents also, because they were on the planet 20 years before you or 30 years before you, doesn't make them very wise. तो उनको No, no. समर्पण करना प्रॉब्लम हो जाएगा. वो सत्य नहीं, और धर्म के प्रॉब्लम मार्ग पे होगा. हैं, कोई गारंटी नहीं है. यस सर, बट लिसनिंग टू देम एंड समर्पित होना उनकी तरफ कि हाँ भाई, इनको जैसे हैं ये इनको वैसे ही अपना लो. सो दैट इज ऑल्सो समर्पण. Listening and respecting elders and parents is your कर्तव्य. पुत्र धर्म है आपका. ओके ओके आप ओके. अपने धर्म का पालन दैट कर रहे आई हो. वाज ओके. आई वाज समर्पण नहीं है कंफ्यूज्ड. वो धर्म का पालन ओके है. माता ओके पिता की सेवा करना आपका धर्म है. ओके. अपने बच्चों को गाइड करना आपका धर्म है. तो आप अपने पुत्र धर्म का पालन कर रहे हो और आप अपने मातृ धर्म का पालन कर रहे हो व्हेन यू आर गाइडिंग योर चिल्ड्रन. इसमें समर्पण वाली बात है ही नहीं. समर्पण ह्यूमन बीइंग्स के साथ ना रखो, ज्यादा सेफ रहोगे. दैट्स ऑल आई एम सेइंग. बाउंड नहीं होंगे, मोह में नहीं फंसोगे और सत्य और धर्म के मार्ग से भटकोगे नहीं. समर्पण करना ही है तो हाईएस्ट लेवल पे जाके समर्पण करो ना, जो 100% डिवाइन है. कंफ्यूजन है तो मत जाओ उनके पास, उस गुरु के पास मत जाओ जिन पे डाउट है. जो 100% डिवाइन है उन्हीं के पास जाओ. और स्पेशली इफ दे आर नॉट इन द बॉडी फॉर्म, इट इज सेफ, क्योंकि देन आपको उनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है और वो आपसे एक्सपेक्ट कर नहीं सकते. मेकिंग सेंस? अगर कोई Yes, बॉडी sir. फॉर्म में होगा, एक्सपेक्टेशन आनी ही आनी है. सी आई टेल यू, रामकृष्ण परमहंसा was supposed to be an avatar. Of course I will not get into that discussion, वरना फिर confusion हो जाएगा कि कैसे अवतार बन गए, क्योंकि किसने सर्टिफाई किया. हाँ, स्पिरिचुअल सर्टिफिकेट लेके आओ तो वो सब मुश्किल होगा. तो राइट, तो उस पर नहीं जाएंगे हम. लेकिन उनके फेवरेट डिसाइपल थे. यस थे. स्वामी विवेकानंद was his favorite and there were always a few favorites for him. So that means the Guruji is not impartial, he is partial, correct? अभी भी अगर आप देख लो, सदगुरु जी के भी कुछ फेवरेट्स हैं, श्री श्री रविशंकर जी के भी कुछ फेवरेट्स हैं, एंड आई डोंट नो बट मे बी डेफिनेटली शिवानी जी के भी कुछ फेवरेट्स होंगे. सो एवरीबडी विल हैव आपके सम भी सर. फेवरेट. हाँ, मेरे भी फेवरेट हैं, आपके भी. पर मैं गुरु नहीं हूँ, मैं टीचर हूँ. हाँ, तो आई हैव माय ओन प्रेफरेंसेस, राइट? एवरीबडी हैज ए ओन प्रेफरेंस. नाउ देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट. दैट डजंट मेक मी लेस डिवाइन और मोर एनिमल, करेक्ट? ओनली थिंग इज प्रेफरेंसेस होंगे. अब जैसे ही मैं प्रेफर किया, सपोज मैंने संजीव को या अमित जी को या गुंजन को प्रेफर किया, हाँ, तो कृष्णा विल फील बैड. हाँ, मेरे को तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया. देयर इज बाउंड टू बी ईगो हैसल्स ना. मैं कुछ बोलूंगा, इट विल बी सूटिंग फॉर 3 people, दे विल बी वेरी हैप्पी, एंड द अदर 3 who are not benefiting from it, वो कहेंगे ये क्या बोल दिया सर ने. So it is always problem. So don't deify any human being when he is in human form. बॉडी फॉर्म छोड़ दे, उसके बाद जो मर्जी करते रहो, फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज अब उसके साथ प्रेफरेंसेस और एक्सपेक्टेशंस खत्म हो गई है. सो अंडरस्टैंड इट दैट वे, यू विल बी सेफ. दैट्स ऑल आई एम सेइंग. तो किसी लाइव गुरु के पीछे मत भागो. एनर्जी फॉर्म के गुरु को पकड़ लो, इट इज सेफर. एंड ऑफ कोर्स सरेंडर टू द डिवाइन, दैट इज द इजीएस्ट वे. कोई डाउट ही नहीं है ना. See, when Lord Ram was alive and when Lord Krishna was alive, there were many enemies. जरासंध was his enemy, शिशुपाल was his enemy, बहुत सारे enemies थे उनके. तो सब तो उनको भगवान नहीं मानते थे ना. तो उनको कंप्लीट सरेंडर करना उस समय मुश्किल होगा, आज तो मुश्किल नहीं है. नाउ तो वी नो, राइट? सो कॉन्शियस डिसीजन लेके चलिए. इस पे हम ज्यादा डिस्कशन अब नहीं करेंगे क्योंकि बहुत कम टाइम रह गया है, राइट? बट आई थिंक आई मेड माई पॉइंट क्लियर. Surrender has always to be the divine. The Guru can show you the path, and your sadhana is your Purusharth. So whatever we have covered till now makes sense. पुरुषार्थ ही आपकी नियति बनाएगा. और कितनी जल्दी आप स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ेंगे, ये वो डिसाइड करेंगे जब आपको गुरु से मिला हुआ एक पथ मिलेगा, उस पर आप तेजी से चल पाएंगे. So the Guru is there to accelerate your journey. But the divine grace will come with your Purusharth and the Guru's blessings.
ये दोनों चीजें होंगी तभी डिवाइन ग्रेस मिलेगा। तो मैं ये नहीं कहता कि गुरु की जरूरत नहीं है। यू शुड ऑलवेज हैव ए गुरु हु कैन शो यू द पाथ, एंड इफ यू आर रेडी द गुरु विल अपीयर, एंड व्हेन यू आर फुल्ली रेडी द गुरु विल गो आउट। उनका जो काम है वो करके निकल जाएंगे। Okay, so let's have some sharings and let's acknowledge everybody who shared. Let's welcome a few people who have just joined. Rajiv ji, welcome. And team Tandon. ये team Tandon कौन है? Then spine. अच्छा, VP Singh ji. VP Singh ji. VP Singh ji. Okay. VP Singh ji, welcome. Yes. Anybody else who wants to share? क्या खुल के आ रहा है? Anything you want to share? Amit ji. सर खुल के यार लेट आया हूँ, लेकिन मैसेज मुझे आपका मिल गया कि फिजिकल गुरु की जगह एनर्जी गुरु या डिविनिटी को सरेंडर कर दो, रिवल्यूशंस आने लग जाते हैं थोड़े समय में। बड़े आसानी से, क्योंकि आपके एक्सपेक्टेशंस और आपके ईगो बीच में नहीं आएंगे। आप बहुत क्लियर चैनल बन जाएंगे व्हेन यू आर ओनली कनेक्टिंग विद द डिवाइन। सेलेस्टियल मास्टर्स को ढूंढो ना, जितने गुरु आप जानते हो वो सारे सेलेस्टियल वर्ल्ड में हैं, उनसे कनेक्ट कर लो, आपको क्लियर डाउनलोड मिल जाएगा। दे विल आल्सो बी हैप्पी दैट समबडी इज रिमेंबरिंग देम, राइट, एंड दे विल ब्लेस यू वेरी इजीली। कहाँ लाइव गुरु के पीछे जा रहे हो? So that is my completely, that is my take. It is not mentioned anywhere in Shastras. हर जगह लिखा है समर्पण करो गुरु को, लेकिन मैं बोलता हूँ एनर्जी फॉर्म के गुरु को समर्पण करो या डिवाइन को समर्पण करो। लाइव गुरु will be a bit tricky unless you are 100% sure. और जितने 100% श्योर पहले थे, मैं बहुत लोगों को जानता हूँ 90s में जो लोग बहुत ब्लाइंडली फॉलो करते थे, I won't say, but many of you know where they are right now. I will not say anything on that. बहुत इंपॉर्टेंट बोला है, लाइव गुरुज आर ट्रिकी, देयर मॉडल इज वेरी डिफरेंट। पहले छोटा पहले था समर्पण, फिर मकान सरेंडर, प्रॉपर्टी सरेंडर, सेवक बना के चौकीदार पे खड़ा कर दो बाहर। Right. So you never know who is actually the कितने 100% डिवाइन है नहीं पता चलता, क्योंकि बाहर की दुनिया अलग है उनकी, अंदर की दुनिया इज वेरी वेरी very very secretive, so you don't know what exactly is happening behind the curtains, I would say, behind the doors. Closed doors में क्या हो रहा है, you never know, and many of them are in a real soup, correct? Okay, so we will not discuss much on that. Yes, Anirudh ji, आपने हाथ खड़ा किया था, anything you want to share? नहीं, बस आंसर मिल गया मुझे। अभी आपकी बातचीत हो रही थी वीकेसी जी से कि रियल गुरु वही है जो आपको डिवाइन के साथ मिला है। बिल्कुल सही बात बताएगा आपके लिए, वही रियल गुरु है। जो गुरु वो जो अपने बारे में कह रहा है वो तो गुरु नहीं हुआ ना। वो छोड़ दीजिए, कौन गुरु नहीं है उसकी बात ही नहीं कर रहे। आपको सही गुरु जो है वो आपका सही मार्ग बताएगा, क्योंकि वो आपकी स्पीड जानता है। वो आपको जानते हैं, आपकी स्पीड जानते हैं, तो वो बताएंगे भैया इस मार्ग पे चलो, तुम गलत मार्ग पे चल रहे हो, ये मार्ग पे चलो, तुम्हारी स्पीड अच्छी बनेगी, तो मे बी 20 साल 25 साल या 5 जन्म में आप पहुंच जाओगे वहां। दूसरी जगह तो कोई गारंटी नहीं है ना, आप दलदल में फंस जाओगे आगे जाके। तो बेस्ड ऑन योर फ्रीक्वेंसी द गुरु विल नो व्हाट पाथ विल सूट यू, दैट इज हिज जॉब। गुरु को सिर्फ इतना ही काम। यस, ओके, वेरी गुड। सो वी आर वेरी क्लियर ऑन many things. Let's acknowledge everybody who shared. So that was the whole idea of Samarpan. And so Samarpan is always done to the divine. And क्या समर्पण कर रहे हो आप? अपना ईगो। अपने ईगो को जितना समर्पण करोगे आप, उतना डिविनिटी आपके अंदर जागृत होगा, and then you will be able to move on your spiritual journey faster with the guidance of the guru and with the divine grace. That is the whole message of Samarpan, how Samarpan helps you in your spiritual journey. Yes. Okay, so let's have any take from anyone who has come late. अभी बाद में आए। राजीव, anything you want to share? कृष्णा, anything you want to share? देवेश जी, आपका सवाल अगर रिफ्रेम हो गया तो दोबारा पूछ सकते हैं। मनी जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? ज्ञान पाठ इतना ही था। If there is any discussion required, we will do that. Anybody? Okay, Sanjeev, your take. Anything you want to share? See, I understood lot of things opened up, and very clearly, to keep it very simple, समर्पण का जो दो शब्द है, सम प्लस अर्पण, I take that. So sum is like equanimity, arpan is detachment. So I think whatever I can give
with detachment, without any expectations, I take that is Samarpan, being in the moment. Being in the moment. Absolutely perfect. Very good definition. So acceptance with the flow of life, that is Samarpan. समता के साथ अर्पण किया. So whatever is happening in your life, accept that and be in the flow of life, that is Samarpan. Absolutely perfect. Going with the flow बोलते हैं ना. So you accept life the way it is and you go with the flow. That's another brilliant definition of Samarpan. Yes. Now, what will happen when you actually do Samarpan? How will you know कि मैं समर्पित हूँ? सोचने को तो बहुत बढ़िया अच्छा आइडिया है ना. तो मैंने अपने ईगो को समर्पण कर दिया, कैसे पता चलेगा? What will be I doing then? अगर मैंने ईगो को समर्पण कर दिया, there has to be some godliness which will be invoked in me. Correct? Am I expressing godliness? Am I doing some godly acts? So my godly behavior will be a proof of समर्पण. There is no other proof. मैं सोचता रहूं मैंने समर्पण कर लिया, मैं तो बहुत बड़ा जो भी बोले हाँ बन गया हूं, तो उससे पता कैसे चलेगा? Am I doing godly acts? मेरा बिहेवियर गॉडली है क्या? क्या मैं अभी भी गिल्ट में घूम रहा हूँ, ब्लेम में घूम रहा हूँ, सारी दुनिया को ब्लेम कर रहा हूँ, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई? तो ये गॉडली एक्ट नहीं है. कंप्लेनिंग, ब्लेमिंग, गिल्ट में, आप पूरी तरह से गिल्ट में हो. हाँ, आपसे कोई गलती हो गई कभी, हाँ कभी जवानी में गलती हो जाती है, हाँ कभी बचपन में गलती हो जाती है, बहुत कुछ हो जाता है. अगर गिल्ट में हो और अगर आप ब्लेम में हो, तो क्या आप गॉडली हो? क्या आपने समर्पण किया? अब मैं कुछ और बोलूंगा, अगर लैंग्वेज अगर अलाउड होती मेरे को, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, आपने समर्पण नहीं किया. करेक्ट? सो गॉडली बिहेवियर होना जरूरी है, तभी पता चलेगा समर्पण है कि नहीं. व्हाट काइंड ऑफ गॉडली बिहेवियर विल यू डू? एक्सप्रेशन क्या है हमारे बिहेवियर के? थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शन. एम आई थिंकिंग लाइक ए डिवाइन? क्या मेरे थॉट्स डिवाइन थॉट्स हैं? क्या मेरे वर्ड्स डिवाइन वर्ड्स हैं? क्या मैं गाली गलौज कर रहा हूँ? गाली गलौज कर रहा हूँ तो क्या मैं डिवाइन हूँ? नहीं. चीखा चिल्ली कर रहा हूँ तो मैं डिवाइन हूँ? नहीं. रो रहा हूँ, पीट रहा हूँ तो मैं डिवाइन नहीं हूँ. बहुत सिंपल है. माई वर्ड्स हैव टू बी डिवाइन, because the words are coming out with lot of prana shakti. Words can manifest. So am I using the right words in my life? Am I doing the right actions in my word? क्या मेरे beliefs डिवाइन हैं? क्या मैं अपने बिलीफ सिस्टम, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को छोड़ सकता हूँ कि मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू को अटैच हूँ? बिल्कुल, ये मेरा मत है और मैं इस मत के लिए अपनी जान दे दूंगा, चेंज नहीं करूंगा. तो फिर आप कहाँ के डिवाइन हुए? तो यू शुड हैव ए फ्लेक्सिबल पॉइंट ऑफ व्यू. अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो. कोई मानता है तो ठीक है, नहीं मानता तो भी ठीक है. देन यू हैव ए फ्लेक्सिबल पॉइंट ऑफ व्यू. आर यू एडमेंट इन योर बिलीव्स? देन यू आर नॉट गॉडली. अगर आप गॉडली बिहेवियर रखते हो, यू विल बी वेरी वेरी फ्लेक्सिबल इन योर बिलीव्स and discard every other belief, and the right understanding is I am God in human form. I am God in human form. This is the only belief that you should have. This is the right understanding. Then it is surrender. But then you are surrendering your thoughts, you're surrendering your emotions, you're surrendering your beliefs, and you're surrendering your ego to the divine, and you're invoking the divine in you, and you're actually becoming an avatar in making. And that is the expression of Samarpan. Making sense? Yes. Yes, Anirudhji. Then I will come to Gunjan. Yes, Anirudhji. Good. आप म्यूट पे हैं. ना, आप ठीक ही बता रहे हैं कि पर्पज ये है कि हमें गॉड लाइक बनना है. मैं उसको गॉड लाइक कह देता हूँ कि, और गॉड लाइक बनने के लिए जो मैंने सोचा है, सिंपल करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए 3 चीजें चाहिए. एक तो ये मानना पड़ेगा कि ऑल आर वन, कि गॉड भी वन है. तो आपको जब गॉड वन है तो आपको ये मानना पड़ेगा कि ऑल आर वन. सेकंड इज केयर ऑल.
गॉड भी सबकी केयरिंग करता है, तो आपको भी केयर करनी लव ऑल पड़ेगी। कर दो ना, केयर की जगह लव ऑल कर दो। एक ही हाँ। बात है सर, केयर, हाँ। हेल्प, लव एक ही में आ गया। हम्म। और तीसरा है फॉरगिव ऑल, वो भी चलो, सबको फॉरगिव करता है, आपको भी फॉरगिव करना पड़ेगा। बाकी ओके, तो बहुत है, लंबा चौड़ी है कहानी तो। ये बढ़िया, तीन परफेक्ट है, बहुत बढ़िया। So idea is that you are invoking the divine in you and you are doing godly behavior. ये सब godly behavior में आएगा, तो perfect है, बहुत बढ़िया अनिरुद्ध जी, फर्स्ट क्लास। यस यस गुंजन जी, भूल गए। ओके, सो इन द मैं एंड व्हाट भूल यू हैव जाती टू, हूँ सर, हाँ कोई बात क्योंकि नहीं, मैं खो जाती हूँ बातों में, इसीलिए इसीलिए। पेन और पेंसिल लेके बैठना होता है, ताकि आप जल्दी से एक वर्ड लिख लें, वो वर्ड्स देखते ही आपको पूरा थॉट प्रोसेस याद आ जाएगा, ठीक है जी। Because when you want to share, maybe that is not the right time. I'm in the middle of something else. Okay, so you should note down. Yeah. Okay, and another way to understand your samarpan or your when you are surrendering your ego is you always say not my will be done, you will say divine will be done. Sir, जब भी now I आप remember. बोलोगे, कोई भी एक्शन ले रहे हो, तो आप बोलोगे रिजल्ट्स आर इन द हैंड्स ऑफ द डिवाइन, तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग कर्मयोगी बन जाओगे। यू विल से डिवाइन विल बी डन, मेरा विल नहीं, मैं ये चाहता हूं, मैं ये एक्शन ले रहा हूं, लेकिन रिजल्ट्स डिवाइन के पास है। डिवाइन विल बी डन, सो यू आर सरेंडरिंग द होल, सारी अटैचमेंट आपने छोड़ दी एंड डिवाइन को आपने सरेंडर कर दिया, एंड वॉट एवर इज द रिजल्ट कमिंग टू यू, आप उसे भगवान का प्रसाद समझ के एक्सेप्ट करोगे। ये समर्पण है। सो आई होप विद दिस वी आर कम टू द राइट कंक्लूजन, राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज समर्पण। यस यस गुंजन, गो अहेड। Yeah, sir, once I told you that there is one guru, I don't want to name anyone. I never liked him. I never liked him. तो आपने उनके कोट्स शेयर करने शुरू किए थे। आई केम न्यू इन DHV एट दैट मोमेंट, एंड मैंने बोला था कि ये बंदा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे इसकी कोई भी बात ठीक नहीं लगती। एंड यू टोल्ड मी दैट don't become egoistic and just listen to his words, don't listen to the person. तो वहां से मैंने वो चीज अपने दिमाग में बिठा ली थी कि हमें किसी की चीज अच्छी लगती है तो वो बंदा ठीक है, बंदा गलत नहीं है, उसकी चीज ठीक है, पर तो वहां से ईगो मेरी काफी ज्यादा डिसॉल्व होनी शुरू हुई थी। Absolutely. See, the message is important. Messenger is never important. या वो तो सिर्फ एक माध्यम है, वो तो सिर्फ एक निमित्त है जिसके थ्रू वो मैसेज आपको यूनिवर्स ने देना था, तो दे दिया, राइट। सो देन मैसेज आई इज ऑलवेज स्टार्टेड इम्पोर्टेंट। लिसनिंग टू एवरीबडी। या तो जो मुझे अच्छा लगता है देन आई एक्सेप्ट इट, अदरवाइज आई डिस्कार्ड इट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। Yes, so that is the wisdom part. That is the wisdom for this session. So I'll take more questions, but before that, let me just quickly tell you something more about what we have in store. There is a wonderful, wonderful event coming up on this Saturday, and that event is about abundance, about your mindset and wealth, abundance and wealth, right? So it is a great experience, and you're going to hear some great wisdom bites from Sanjeev, and that is the event that we are having on this Saturday. I hope everybody is informed on this. You must have seen the posts coming, so please register. My sincere request to all of you is that register, and of course, energy exchange is as good as free. So be there and create abundance of wealth in your life, because there's a lot of significant movement happening on this planet Earth. There's a solar eclipse coming on 8th. There is a Navaratri starting from after that, and Ramanavami on 14th. There is a lot of healings happening in there. तो ये पूरा अगला साल जो है, I was discussing with Amit ji, it is going to be a great spiritual, you can say, surge of consciousness on planet Earth. And even if you are looking for materialistic goals, it has to be done with a spiritual touch, otherwise it will not come to you. So in that context, this event becomes even more significant and more, you can say, powerful. So I request and invite all of you to consider this as an invitation and attend that event. And that's all from my side. Sanjeev, if you want to add something more on it, anything you would like to share? Perfectly fine. Already some in the group has registered.
They have already registered and they have done the needful. And rest, whoever wants to join, that would be like a very different level program, not the general program. That's what I can say. Perfect. Very good. And keep watching in the DHV group. There we are coming up with a brilliant Navratri healings for you, and it is a great surprise package for all the DHV members, because there is for the first time I've got the intuition that this has to be free for the DHV members, right? So the Navratri healings will be free for all the DHV members, and it's going to be a great event, and it's going to be very, very powerful for all of you. Yes. So that is from my side. Anybody else who wants to share anything of the session today? क्या लेके जा रहे हैं? Any question that you have? I will take last and final call. It's still, we have some minutes, so we can discuss. Yes, Amitji, go ahead. So one thing about this session for Saturday, which Sanjeev ji is organizing, I want to vouch for it. I mean, I have attended almost all his sessions, and something new came up, which I was not even expecting. So most of the time, the topics have been different, but very crisp and very profound. I recommend all of you to I think, what is the duration, Sanjeev sir, you kept for this session? 1 hour? No, this is 2.5 hours. 2.5 hours. Yeah. 1 hour will not be doing justice at all. Okay. So I'm all in for it, especially for wealth. Baniya me will surely join. And more than wealth, it is actually the abundance which is important, because it is a abundance mindset. And wealth is just a symbol of abundance of health, wealth, happiness, and joy for you. Absolutely. All right, very good. So with this, on the session today. Go ahead. No, it's just that session today on the surrender. So yeah, last 3-4 years, I've also kind of understood what is the exact meaning of surrender. It takes a lot of courage. Just one small thing which I realized that there are a lot of similar bites on internet available, and there is something called art of not forcing. Yeah. So art of not forcing. So if you want to know more deeper practical applications of how to surrender, there's some videos available on YouTube, primarily from people from the Western world. So one can YouTube and get deeper into this subject. This is very good. And so I was discussing with Shashi sir also today, even surrender has been considered as one of the very important tools for manifesting miracles. Briefly, I think the time is up, but even miracles manifest, and there is a very spiritually scientific way to do it. So absolutely, thank you. Absolutely. Because see, when you are surrendering, there is no struggle. बिना किसी struggle के, with ease and joy and glory, you are creating magic and miracles. So that is the foundation. So obviously, when you are surrendering, there is no struggle. Struggle नहीं होगी तो सब easy है. It will all come to you with ease and joy and glory. That's all I say, right? Okay, very good. So with this, we come to the end of the session. Yes. Sir, I am also surrendering to the session for Sanjeev sir's session and for Navratra's healing. So I'm surrendering to it. Perfect. That is my takeaway. Great. Yes, Sanjeev, go ahead. And Shashi, with today's session, what you discussed is just the last thing when you talked about how do you know that आपने समर्पण करा नहीं करा है. So it reminds me of one difference which I felt in last 3 days only, just 3 days ago. So I have been like going into the neutral mode, but कहीं ना कहीं judgment आ जाता है थोड़ा बहुत. And 3 days ago, I realized one line that हम बोलते हैं सबके अंदर भगवान है, सबके अंदर भगवान है. So इसका मतलब सामने वाला जो भगवान है, सामने वाला जो वो भी भगवान है. अगर मैं भगवान हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, तो वो जो कर रहे हैं वो भी गलत नहीं हो सकते. वो अपने लेवल पे ठीक कर रहे हैं, वो भगवान अपने लेवल पे ठीक कर रहे हैं. Yeah. And then एक ट्रांसफॉर्मेशन आया विद कहते हैं ना स्नैप ऑफ अ फिंगर, कि फिर मैं किसी को देख के परेशान क्यों होता हूँ. एंड 3 days ago दिस ट्रांसफॉर्मेशन ट्रिगर्ड, और तब से लेके आज तक मैं इतना क्लियरली समझ पा रहा हूँ कि
अब किसी को देखता हूँ किसी भी कंडीशन में, किसी भी बिहेवियर में, किसी के साथ, एंड आई जस्ट आई एम एट पीस, कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैंने इसको रिलेट करा कृष्णा की स्टोरीज जो हमने सुनी है, कि कृष्णा के सामने कोई भी कुछ कर रहा, उसे फर्क नहीं पड़ा था, तुम्हारे को करना कर लो, इट्स योर लाइफ। And that is what I feel when you're talking about the results of Samarpan. How do you know? So at least I realize in this one aspect, probably I am moving towards Samarpan. I don't know. Absolutely great. Fantastic. Brilliant. When you are not getting disturbed, when you're not getting disturbed by others' behavior, you're absolutely at peace. Right? और पीस में तभी होते हैं जब आपका ईगो शांत हो, वरना ईगो का कीड़ा उछलता रहता है ना, तो फिर वो शांति से बैठने नहीं देगा. So if you are absolutely experiencing love, peace and joy, your ego is at place and you are completely in surrender mode. Absolutely brilliant. Wonderful. Yes, Anirudh जी, कुछ कह रहे थे आप? बस ये ठीक कह रहे हैं सर. वननेस का मतलब यही है कि जब दूसरों की बातों से हम डिस्टर्ब ना हो, दैट इज द वननेस, रियल मीनिंग ऑफ वननेस. मैं तो बहुत सालों से फॉलो कर रहा हूँ सर. बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास. यस देवेश जी, गो अहेड. जो सर अभी संजीव जी ने जो बात बोली है ना, मैं उसको जो संजीव सर ने अभी बात बोली है तो मैं उसको फॉलो करता है, and I don't get disturbed from the others' opinions and the behaviors and all those things. So I really feel at peace. Very and good. I am a very cool-minded person also. Great. So that is how you need to look at. Now pick up more godly behavior, because it is one aspect you have seen. There are many other aspects where you may not be godly. So pick up those aspects. You know, जैसे अपने बहुत सारे हो सकते हैं, कोई भी ले सकते हो. जैसे मेरे लिए वचन पालन का एक था. If I say something, it has to happen. It should manifest, and I have to follow it. So this is something which I'm taking on recently after when I started Yoga Vasishtha. जो मैं बोल दूं, I have to do it, and it has to manifest. I have to do the necessary action, and it will manifest. It has to manifest. The only thing is it will take some time. That's all, right? So I was discussing with Sanjeev in a very, with a bit of a humor. We were saying that we are posting videos and shorts and all that. So I said, इस बार 400 पार. तो वो 400 पार हो गया. Right? So now we are similarly picking up, whenever we post something, we declare it. We say a number and it manifests. वो हो जाता है. And it has never happened before. I was sharing with Amit ji also. One of my videos got 600 plus. So 600 par ho gaya. Very good. So that way. So it is all fun. But yes, your words have power. So don't misuse your words. It is the divine speaking to you, through you. So it has a lot of power and it will manifest. So be very careful what you're thinking, what you're saying, and what you are doing as a deed. Because it is an expression of your divinity. So with this, we come to the end of the session. Thank you very much for your participation, and I hope this was valuable to all of you. And we meet again next week. Till then, Aham Brahmasmi. Good night. Take care. Bye-bye. Good night. Good night.